नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो स्टॉक रिव्यूज करेंगे। सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज Dynacons Systems and Solutions Ltd. This is an IT company, around 1400 crore market capitalization is company ka, and this company has been suggested by Tara Krishna, Mr. Srinivas and Mr. BVN Bhaskar Rao. Right, so this company, as I told, is a small cap company. It is an IT infrastructure service provider, right? So it provides cloud computing services and system integration services to predominantly PSU clients. So unlike other IT companies, 96% of revenues come from the domestic market. Sort of exports is only 4% of the total top line, and it works with global clients like McAfee and Pfizer as well, but predominantly it works with government clients. It works with PSU clients like LIC, RBI, City Union Bank. उनका पूरा infrastructure, IT का infrastructure पूरा revamp कर रही है, right? So this is a company which works on the lowest cost producer model, क्योंकि IT company है, I mean जो सबसे सस्ते में और सबसे efficiently और सबसे तेजी से काम करके देगा उन्हीं को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स या बिड्स मिलते हैं. तो आई थिंक कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इट्स अ लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मॉडल दैट IT companies work on. And the receivables, the fact that it is working with PSU companies, there is a problem of receivables. The receivables are a bit extended because they have a milestone based payment, right? So if you look at the stock price of this company, it is in a downtrend actually for the last 1 year, and I think this could be attributed to multiple things, but one of the important things is that there is a major kind of a headwind for IT companies. Global IT scenario इतना कुछ strong नहीं है, जिसकी वजह से this company being a subset of the larger IT universe is not performing that great, because इसके जो numbers अगर मैं देखूं, so these are good numbers that this company has shown. If you look at the last 3 years sales growth, it's 25%. Last year it's 24%. Last three kind of compounded PAT growth is 64%. Last year it's 35%. Long-term sustainable metrics like 34%. काफी asset light model है, so fixed asset to total asset is just 1%. So काफी asset light model पे company एक तरह से काम कर रही है. बिकॉज ऑफ द लार्जर रिसीवेबल्स और एक्सटेंडेड रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल डेट ज़्यादा है, राइट? तो एक तरह से व्हेन यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यू कैलकुलेटिंग EBIT डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट. तो वो डेट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई यू सी दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेसर देन रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो इस कंपनी ने बहुत कम इक्विटी डाइल्यूट किया है, राइट? तो आई थिंक 3 साल पहले 2022 में they kind of raised 2 crores, right? But beyond that they haven't diluted equity, and long term या term debt जो है वो भी balance sheet पे कुछ है नहीं. So it's only working capital debt that this company has because of the longer receivable or extended receivable period. So anything above 25% return on capital employed, return on equity, these are good numbers that this company has, 36% and 34% respectively, right? So return on capital employed is how efficiently the company is using shareholders equity and debt, and return on equity is how efficiently the company is using shareholders equity, right? So if equity investors or people who have invested through preferentials, warrants, QIB, कितने efficiently उसका पैसा एक तरह से कंपनी इस्तेमाल कर रही है. So these are the numbers which are very critical for people like us who invest in equities, right? So operating profit margin is on a lower side, obviously, because low cost arbitrage model होता है, low cost producer model होता है इनका. That's why you do not have a lot of pricing power. Barriers to entry is very low, and switching cost is very, there's no switching cost actually. You can just move from one vendor to another. These are IT companies that we're talking about. That's why the net profitability margin, if you see, is below 10%. The net profitability margin काफी खस्ता है. Normally companies with decent business models, with moats, have a net profitability margin of more than 10%, right? So CFO to EBITDA is 0.5. तो receivables का जो भी issue मैंने बताया, right, that is something which is coming into picture over here. So if you look at the receivables data, this is the receivables line. So you have 125 crore, 101 crore. So this company is not able to convert profits into cash flows that easily, right? The bargaining power with customers is very, very low, right? So you're talking about PSU companies. So the bargaining power with PSU companies to which this company is a service provider, it's very low. It's a free cash flow positive company, right? So 8 crore का free cash flow है, तो margin of safety काफी सही है इस company में. Reinvestment rate 16% है. The fact that this is a very asset light company, मैं नहीं expect करता हूँ कि reinvestment rate भी ज़्यादा होगा, right? If you look at the equity dilution history, there is
not a lot of equity that has been diluted, so I'll just go to that page, right? अगर आप यहाँ पे देखोगे, conversion of warrants happened in 2022, right? करीबन 4,55,000 warrants at a premium of 18 per share. So this is around 80 lakhs that we're talking about. Then again in the same month, 9,60,000 shares allotted at a premium of 18. Again we are talking about 1.2 CR. तो करीबन 2 करोड़ तक का इक्विटी रेज किया है, और वो भी बहुत डिस्काउंट पे रेज किया है, राइट? द स्टॉक प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन FY22, इफ वी जस्ट चेक द स्टॉक प्राइस, राइट, अगर यहाँ पे 22 की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेज, राइट? At this phase, so the stock price was trading at around 375. So raising money at 18 rupees per share is a lot of discount. So अगर मैनेजमेंट इतने डिस्काउंट पे पैसा रेज कर रहा है, तो इसका मतलब the management is not very confident about the business. In spite of that, the stock price went up because of, you know, good sales growth and profit growth. But when you raise capital at such a discount, तो sideways में बहुत move करता है stock price. So if you look at the time after September 22, यहाँ पे देखो आप, sideways में बहुत move किया है यहाँ पे stock price, right? Right. So if you look at the debt, the term debt over here, मैंने इसको highlight भी नहीं किया because the debt is minimal. It's around 3 crores. But if you look at the short term debt, it's around 49 crores. थोड़ा जो receivable days जो increase हुआ, या फिर receivables का जो issue है, that gets highlighted in the short term debt, right? तो as I mentioned, fixed asset to total asset is just 1%. तो काफी capital light business है, asset light business है, right? And you know, the P of this company is 18. The last 5-year P has been 18 as well, right? So in the last 1 year, the stock price went down from 1,325 to 1,056, which is a 30% का एक तरह से downward correction, but the EPS went up by around 35%. So the contribution of P to the stock price is minus 65%. The stock price has gone up because of the earnings growth that the company saw, right? Yeah, so these are the questions which I normally ask after any analysis. So can the company grow at more than 15% sales growth in the next 2 years? I think the order pipeline is decent. It's not great, but it's decent, but it can deliver more than 15% sales growth. Sectoral tailwinds, if I have to characterize in digital transformation as a sectoral tailwind, which is there for the last 10, 12 years, then yes, there are sectoral tailwinds. EPS growth, the company 25% से ज़्यादा देगी. Equity dilute ज़्यादा करती है company. So if the company will give a PAT growth of, let's say, 30-35%, then that would categorize as EPS growth of 30-35%, because I don't think so the company will dilute equity, because itna asset light model hai, they do not require equity or debt except for some short term debt, right? Is it a cyclical business? Not really. It's not a cyclical business, right? Is there profitability in the business? No, it's not. There's no profitability in the business, right? The predictability of cash flows is not there. That's why the receivable days are higher. Can the balance sheet support growth for the next 2 years? Yes, I think it can. Is the stock undervalued? Yes, I think the stock is undervalued at a PEG of 0.28 or a current PE of around 18. So this company we can take for a second level analysis, right? We'll move on to the next company now. The next company is Ashoka Buildcon Ltd. So Ashoka Buildcon is an EPC company, around 6,000 crore का market capitalization है. तो ये company काफी famous है roads बनाने के लिए. It works with NHI, Ministry of Road and Transport. 70% of the business comes from road construction. Then power transmission and distribution is 23%, and railways is around 3%, right? So this company has a decent order book, करीबन 1.4x FY25 sales का order book है इस company के पास 15,000 करोड़ का. The capex that this company has done is around 200 crores, which is predominantly plant and machinery. So this company has been asked for a review by Anupam Tripathi and Shouvik Mondal, right? So इस कंपनी का गाइडेंस जो है वो करीबन सेल्स ग्रोथ का 10% है एंड एबिटा का 10% है, राइट? एंड इस कंपनी में मुझे बहुत सारे वीकनेसेस दिखे, बट इसका पी मुझे बहुत कम लगा, राइट? इसका पी कुछ 3.5 का पी है. इसमें बहुत सारे वीकनेसेस लगे. सबसे बड़ा वीकनेस जो मुझे लगा, बिफोर आई कम टू द फंडामेंटल एनालिसिस, इस पे डेट बहुत ज़्यादा है. बट ये कंपनी कुछ अपने इसके सब्सिडरीज है which it is trying to sell, or the contract or the projects which it had done via those subsidiaries. So this company is trying to do away with these subsidiaries, or the projects with these subsidiaries has, and it is trying to raise money via that, with which it wants to clear 95% of its debt in the next 1 year, right?
ये एक चीज हो रही है। एक अच्छी चीज हो रही है कि ये कंपनी कोई इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा रेस करके अपना डेट नहीं कर रही है कम। सो दिस इज अ गुड थिंग। तो अपना जो भी काम किया है उसको एक तरह से सब्सिडरीज में वो बेचकर ये कंपनी पैसा रेस कर रही है, सो दैट इट कैन क्लियर इट्स डेट, क्योंकि इसके कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट है, राइट। ईपीसी कंपनी है, 2 से 3 साल एक तरह से प्रोजेक्ट्स चलते हैं इनके, सो द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई वर्किंग कैपिटल बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत बहुत लंबा है। एंड इट वर्क्स विद गवर्नमेंट क्लाइंट्स, तो रिसीवर्स का थोड़ा जैसे इशू डायनाकॉम्स में दिखा, आपको इसमें भी दिख के आता है, राइट। जो फ्यूचर ग्रोथ की विजिबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने पिछले 2 सालों में थी, जब गवर्नमेंट केपेक्स बहुत भारी मात्रा में हो रहा था। तो थोड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क मुझे दिखा। ऑल्सो द कंपटीशन इज इंक्रीज्ड इन बिडिंग इन काइंड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो बिडिंग नॉर्म्स है एनएचएआई और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने, या फिर जो भी मिनिस्ट्री है उसने थोड़ा रिलैक्स कर दिया। दैट्स वाई द कंपटीशन has gone up, and margin compression थोड़ा मुझे दिखेगा। and obviously it's a highly cyclical business, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स के ऊपर एक तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, एंड रोड्स जो होते हैं, राइट, रिप्लेसमेंट लाइफ टाइम रोड्स का बहुत लंबा होता है। तो एक बार रास्ता बन गया तो 20-25 साल तो चल ही जाता है, मतलब हम मान के चलते कि 20-25 साल रास्ता चल जाए, राइट। बट न्यू ऑर्डर्स आर कमिंग अप, बट मुझे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स जो एक तरह से विजिबिलिटी लगी रेवेन्यूज की, वो बहुत कमज़ोर लगी। भले कंपनी अपना डेट कम कर रही है, विदाउट एनी डाउट 95% डेट से एक तरह से निजात पा लेंगे ये लोग अगले 1 साल में, राइट। बट मुझे सबसे अच्छा लगा इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम है, 3.65 का वैल्यूएशन है। मैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर देता हूँ। इसका पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 19% का है, काफ़ी अच्छा 19% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिया है पिछले 3 सालों में, जब गवर्नमेंट केपेक्स काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा था, राइट। अभी भी हो रहा है, बट द गवर्नमेंट केपेक्स नंबर इज अ बिट स्टैग्नेंट। इट्स 11,000 crore दैट दे आर स्पेंडिंग, विच इज सेम टू व्हाट दे वर spending last year, or it's 10,000 crore actually which they want to spend in FY26. This is 1,000 crore less than what they were spending in FY25, right? तो पैड ग्रोथ वगैरह पे जबरदस्त है कंपनी, राइट। 285% का पैड ग्रोथ दिया है, राइट। एंड इवन इफ यू लुक एट द 5 year metrics, राइट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, इट्स मोर देन 25%। तो इस कंपनी में 1000 खामियां हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट दैट बैड इन दिस कंपनी। इसमें डेट बहुत ज़्यादा है, इसमें रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है। एक और अगर मुझे खामी दिखानी हो आपको, तो इफ यू लुक एट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 10 years इज 106%। इन स्पाइट ऑफ 106% इंक्रीज इन द लास्ट 10 years, द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय ओनली 6% कैगर। तो एक तरह से जो मैसिव टेलविंड्स जो है वो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन में एक तरह से नहीं, they did not result in a stock price increase। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स एन ईपीसी कंपनी, काफ़ी इसका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हैवी था, या हैवी है अभी भी, राइट, अनलेस द डेट गोज डाउन। इफ़ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट्स अराउंड 29%। इफ़ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी, ये 17% आप मत देखिए, यू जस्ट लुक एट दीज नंबर्स, राइट, विच इज़ 3%, 5%, 7%, दैट इज़ वॉट इट वुड बी एज वी गो अहेड, राइट। इसका CFO to EBITDA इज़ 0.3, राइट। तो इतना ज़्यादा जो रिसीवेबल्स का जो इशू है वो काफ़ी एविडेंट है। द डेट ऑन द बैलेंस शीट दे हैव रिड्यूस्ड इट, राइट। जो 3,700-800 था, दैट हैज कम टू अराउंड 728 crores। शॉर्ट टर्म डेट काफ़ी ज़्यादा है। दे आर सेइंग दैट द शॉर्ट टर्म डेट विल स्टे ऑन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ द रिसीवेबल्स इशूज, राइट। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 10% सेल्स ग्रोथ और 10% EBITDA का गाइडेंस दिया है, राइट। सो दिस इज व्हाट द गाइडेंस दैट दिस मैनेजमेंट हैज गिवन, राइट। इफ आई हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क माई सेल्फ आफ्टर एनालिसिस, राइट, तो can the company deliver more than 15% sales growth? नहीं। कोई sectoral tailwinds अभी तो नहीं है, 2-3 साल पहले थे। EPS growth, I don't think so it will be more than 25%. Yes, it's a cyclical business. Is there profitability? No, there is no profitability. Is there predictability of cash flow? नहीं है। Can the balance sheet support growth? Yes, it can, क्योंकि balance sheet एक तरह से हल्की हो रही है। Is the stock undervalued? Yes, I think the stock is undervalued. इनका कुछ current P जो है 3.5 का है। I think the historical P has been 8.8. Right, if you look at the EPS growth as well, 17.9 से 60 गया, which is an increase of around 235%, but the stock price went down from 230 to 210, which is a decline of around 9%, right? So it is because of earnings growth that the stock price went up. तो इस कंपनी में 1000 खामियां हैं, बट इसका एक जो अच्छा चीज़ है, इसका जो करंट पी है बहुत कम है। एंड इफ
there are investors who look for these kind of companies knowing the fact that company में कोई sales growth, profit growth इतना जबरदस्त नहीं आने वाला है, but it is on valuations that a lot of people invest in such companies, right? So this was a brief about Ashoka Buildcon, and thank you guys. Thank you for your time. These are not stock recommendation. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you very much. Take care. Bye-bye.